friends, today in this video we will see the summary of the lesson What a Bird Thought, chapter of Unit 3 from the Poorvi text of class 6 NCERT text. Okay, so in this video I will be saying the summary in English as well as in Hindi. This is the poem What a Bird Thought. It's about a young bird's journey of understanding the world and its own freedom. Different stages are shown in this poem. In the first stanza, it is saying that the bird lives in the cozy little eggshell. The bird is in the eggshell, and when it is in the eggshell, it believes that the shell is the entire world, and it feels that it is round in shape and it has a pale blue color. In the second stanza, it says that it hatches and comes out. Now it is in the nest. When it is in the nest, it assumes that the nest is the whole world. That is the nest made of straw. It is in that nest and it feels that it is the full world. That is the whole world is now the nest because it can see only the nest. It is very small. And after a few weeks, when the wings are little bit stronger, it flutters and comes out of the nest. When it comes out of the nest and sits on the tree, and the tree is covered with green leaves. Since the tree is covered with green leaves, it feels that the world is covered with green leaves. Only leaves are there and it can only see the leaves. Later, in the fourth stanza, it is saying that later the bird ventures out. It goes out and sees the vast world, the vast sky, and now realize how much large the world truly is. When it went out, then only it understands the world is very large. This journey of the bird represents growth. That is self-discovery. As we are growing, we are discovering new and new things. And expanding horizons. That is, there is no limit. Wherever we go, we will learn some or the other new things. The poem beautifully captures how perspective changes as one grows and explores new environments, emphasizing the joy, wonder of discovery. The same is our stage also. In each class, as we grow, we are changing our opinion. We change our opinion, we know more and more things. Through simple yet meaningful imagery, the poem encourages readers to embrace change, explore beyond their comfort zone, and appreciate the boundless possibilities that life offers. There are much possibilities in our life. We can explore many things only when we move far and far. When one thing we learn, we go for the next. So every time we get a new thing to learn. Okay, fine. Now in Hindi. ये वॉट अ बर्ड थॉट छोटी सी पक्षी की कहानी है। वो अपनी दुनिया और स्वतंत्रता को समझने की यात्रा में दिखा रहा है। इसमें 4 डिफरेंट स्टेजेस है, अलग अलग स्टेज है। शुरुआत में पक्षी एक छोटे से अंडे के अंदर है। तो अंडा कैसा है? गोल है। तो उसको ऐसा लगता है कि दुनिया पूरी गोल है। फिर वो अंडे के छिलके से बाहर आती है। अब वो कहाँ पे है? घोंसले में है। तो उसे लगता है कि सारी दुनिया क्या है? वो घोंसला ही है और कुछ नहीं। कुछ दिनों बाद जब उसके पंख थोड़े और बड़े हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, तो धीरे से वो क्या करती है? घोंसले से बाहर निकलती है। जब वो घोंसले से बाहर निकलती है, चारों तरफ उसे सिर्फ पत्तियां, हरे पत्ते ही दिखते हैं। तो उसे वो सोचती है कि सारा दुनिया क्या है? हरे पत्ते से भरे हुए हैं। बाद में पक्षी जब बाहर उड़ता है और आकाश की विशालता को देखता है, तो उसे एहसास होता है कि दुनिया उससे कहीं बड़ी है। जितनी उसने सोची थी वैसा ही नहीं है। पक्षी की ये यात्रा विकास और आत्म खोज यानी खुद को खोज रही है और नए जानकारी उसे मिल रही है। जैसे जैसे वो नई जगह जाती है, रोज एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो उसे नई जानकारी मिलती है। कविता सरल है लेकिन इसमें बहुत ही प्रभावशाली कविता है। इस कविता के द्वारा हमें ये बताना चाहते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं,
हमारा दृष्टिकोण भी बदलता रहता है। हम जो छोटे में सोचते हैं वो नहीं होता, हम थोड़ा बड़े होने पर हमारी सोच। तो जैसे जैसे हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं, हमें बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिलती रहती है। तो ये हुआ इसका हिंदी में summary. I hope you all have understood the summary of this poem. Thank you. If you like the video, please like, share and subscribe.